I work in the world of metaverse for about 3.5-4 years now. I also create a lot of content around it. So on LinkedIn and mostly on LinkedIn, I do a number of inferences on the metaverse and its application or the impact of metaverse on the society in general. While we think that metaverse is just new, actually it's not new. The first metaverse was launched sometime in the year 1973, and Axis Infinity, the one that earlier my friend Aman was talking about, has been in for the last 23 years. So I'm not sure how many of you know about how many of you know about metaverse. If I say what is metaverse, so no one knows here. So I'll try to give you. Do you know what is metaverse? What do you know about metaverse? It's a digital twin of the real world. Yeah. Yes. So I'll try to explain it a little bit more practically as to what exactly is metaverse. So Mother Earth is finite land. जितना है उतना ही है. तो एक दिन तो भर जाएगा. With the way we are growing, 8 billion, one day will be 50 billion also. But we cannot extend another kilometer of Mother Earth. Itna hai, utna hai. So, people thought, why can't we create a virtual land or a virtual world? And why is it called meta? Meta means extension, new or a parallel, and verse is the synonym of universe. But when you think in your mind, so mind is like a metaverse because it has no boundary, infinite memory hai. So when you think of creating that virtual world, you can define the boundaries. You meaning a company could be you could be me, like an individual or a group of people, doesn't matter. End of the day, it's all built on a GPU, on a computer. And we define the boundaries, and then I can have people create content on it. So it's like WordPress. When WordPress was launched, we were all making HTML or different websites banate the pehle. We could go to a designer, he will go make it on a computer, load it on some server and say, sir, ban gaya. Then eventually we thought we'll do it on Shopify. We made all the e-commerce portals. Similarly, metaverse also is nothing but a platform. Now there are multiple types of metaverses. There are names of metaverses which are companies, and types of metaverses could be centralized or a decentralized blockchain based. So when you think of creating a world which has got some boundary, which has the underlying technology for creators to come and build the content on top of that platform, which the creators can monetize without having a third party involved in it, equals to metaverse. जैसे हमने YouTube चैनल बनाया, उसमें 1 लाख फॉलोअर हैं, मेरे को मोनेटाइजेशन होता है $1000 पर मंथ का. YouTube will take $300. Why? मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो, my effort. Why I'll give $300 to YouTube? और अच्छा, YouTube gets all the user because I make good content. Well, it's a double kitty for YouTube. So there is always two sets of thought processes here. One was we will not live in the centralized world, and one was because we don't want dependency. माने आज Facebook में जाता हूँ, मैं अपना रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, शाम को मेरे को Amazon का मेल आ जाता है. Why? That's my data, ना? So I wanted to make sure that my data is in some decentralized chain where I am the person who will authorize the use of data. So any day, any experience you create on the metaverse platform, which you can monetize by yourself, equals to a metaverse. So anything which means is a virtual reality, which you wear and then you see it when you're alone, that is virtual reality. But as soon as you think of metaverse, 99% of the metaverse, other than the meta of Facebook, do not even support virtual reality headgear. Actually, metaverse के लिए VR की जरूरत ही नहीं है. We don't need a VR headgear for a metaverse. Now comes to monetization aspect. How much do you think people must be earning on the metaverses right now? Nike made a Nike land. तो सबसे पहली बात,
कि first of all, how will a general population person like me go create experience of the metaverse? What will I do? तो यहाँ पर एक सज्जन बैठे थे, सुबह मैंने उनको बोला, उनका एक खुराक करके है प्रोडक्ट, खुराक, समथिंग ही was saying खुराक. तो मैंने बोला, how do you attract people? He said, well, you know, we do blah blah blah, 1, 2, 3 things. First of all, how have we over a period of time transitioned in terms of our data consumption? आपने सही बोला. I come from a stage when internet was launched. हमने पकड़ा, we learned, फिर धीरे आगे बढ़े, फिर यूज किया इंटरनेट को, फिर हम एक दिन सेल्फी बनाने लगे, फिर एक दिन टिकटॉक, फिर एक दिन उसके बाद में हमने वीडियोस बना के प्रोड्यूस करके उनको डालना शुरू कर दिया, पोस्ट प्रोडक्शन करके. All of us, we have always consumed better and better content over the last 20 years. हमारे टीवी बेटर हो गए, हमारा OTT का कंटेंट बेटर हो गया, हमारे पास और ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आया. तो व्हाट इज द ट्रांजिशन ऑफ द कंटेंट? ट्रांजिशन ऑफ कंटेंट इज नथिंग बट रीडिंग. वो तो नेचुरल प्रोग्रेशन है. जैसे हम पहले सिविलाइज भी देखा जाए तो नदी के पास रहते थे, फिर नदी के पास इधर आए, फिर आगे सिटी बने, फिर नदी को सिटी में ले आए. ये जमुना जी दिल्ली में है, दिल्ली तभी तो बस ही यहाँ पे बिकॉज जमुना जी है. तो ये ऐसे ही ट्रांजिशन है. तो फ्रॉम 2D वर्ल्ड वी विल मूव टू अ 3D वर्ल्ड. सो 3D वर्ल्ड में जाएंगे, पर 3D वर्ल्ड में कौन जाएगा? यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं, जो पोस्ट 40 हैं, मोस्ट लाइकली वो नहीं जाएंगे. कौन जाएगा इंटरनेट के ऊपर में जाके मैं सुबह क्लिक करूंगा, फिर उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन आएगी, फिर मैं अंदर जाऊंगा? इतना पेशेंस है किसी में? तो एक W करके एक ब्रांड है, एथनिक वेयर. तो उनके ब्रांड हेड ने मुझे फोन किया, बोले आप बताओ क्या होना चाहिए. मैं बोला तो मेटावर्स तो जेन जी और जेन अल्फा के लिए बना हुआ है. तो मैंने माय सन हु इज नाउ इन बोर्ड 10th कर लिया है. तो ही इज द वन हु गोज एंड वियर्स अ VR एंड प्लेस विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग घर में. और माय डॉटर आल्सो गोज टू रॉब्लॉक्स इन अदर प्लेसेस. हमारे सारे फ्रेंड्स के बच्चे सब रॉब्लॉक्स खेलते हैं शाम को. सबसे फनी एग्जांपल है, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उसकी डॉटर, 2 डॉटर हैं, दे वर प्लेइंग द रॉब्लॉक्स गेम्स. तो शी सेड आई विल नॉक योर डोर बट देन यू हैव टू डू समथिंग इन द गेम, तब डोर खुलूंगी. बट दे आर बोथ प्लेइंग 2 रूम में. सो दीज किड्स आर ऑल गेमर्स एंड देर ऑल. सो मेटावर्स की दुनिया में तो जेन जी जेन अल्फा जाएगा. W के कॉन्टेक्स्ट में their टारगेट ऑडियंस इज 26 ईयर से लेकर 45 ईयर. माने 5,000 रुपए का सूट कौन खरीदेगी लड़की? 26 साल की उम्र में आके जब नौकरी करेगी, कुछ पैसा कमाएगी तभी तो ना. मतलब वर्किंग वुमेन है ना, शी वर्किंग वियर है. द एथनिक इज फॉर द वर्क एरिया. तो वो बात कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि 26 साल की जो आपका पर्सोना है, 26 साल से 45 साल की लेडी हु बाइज योर एथनिक ड्रेसेस, तो उस केस में तो 26 साल वाला पर्सोना डजंट फिट. तो दे सेड नहीं, बट आपने कहा था कि यूथ फिट्स. मैंने बोला बट 26 साल की पर्सन को तो अलग प्रॉब्लम्स होती है ना, ग्रोथ नहीं हो रही, शादी करनी है, लड़का नहीं मिल रहा है, सब फैमिली चीजें चल रही होती है. तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो मैंने बोला 45 साल की लेडी को टारगेट करेंगे हम. बोले तो उल्टा है. एक तरफ आप कहते हो जेन जी जेन अल्फा जाएगा मेटावर्स में, एक तरफ आप बोलते हो हम 45 ईयर की लेडी को हम फोकस करेंगे फ्रॉम मेटावर्स. क्योंकि उसका रीजन ये है कि 45 साल की लेडी की 100% कोई ना कोई 3 बच्चा होगा 20-22 साल का. वो 2 साल में आपका कस्टमर है. तो आप क्या करो, 7 फॉर्म्स ऑफ डांस करवाओ, कथक, डिस्को, जैज, कुछ भी मेटावर्स में. तो मम्मा विल टेल द डॉटर, बेटा W का एक मेटावर्स है, उसमें जाना, कथक सिखाते हैं फ्री में, बिकॉज यू आर सेलिंग दैट एज अ रिवॉर्ड. So is metaverse really about going into an experience where I go every day? No, I must have a reward to return to metaverse. जब return to metaverse का reward बनेगा, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सक्सेसफुल एग्जाम्पल. नाइकी ब्रांड एवरीबडी नोस, हम सब नाइकी डाल के बड़े हुए. नाइकी ब्रांड created a land on the Roblox called Nike Land. तो नाइकी लैंड उन्होंने बनाया. आप लोग देखना जब टाइम मिलेगा, यूट्यूब में बहुत बढ़िया वीडियो उसका. नाइकी लैंड जब बना करीब 1 साल पहले, तो नाइकी थॉट एक गेम बनाएंगे, डॉज बॉल गेम. कौन से? आप बॉल मारते दीवार पे ऐसे करते हैं ना, वी डॉज द बॉल, वही वाला. तो दे मेड अ डॉज बॉल. यू नो हाउ मच मनी दे मेड इन 7 months? $600 million. Yeah, they made $600 million out of Nike Land in Roblox. You know how many people from whichever countries? 175 countries. More than over 1 million, 600 to 700,000 kids came to Roblox and played the dodgeball. Nike ने एक कंपनी खरीद ली,
RTKFT, उस कंपनी के साथ स्टार्ट किया इसको बनाना, because they used to design shoes in London. Today you can buy a digital Nike shoe on the Swoosh website, the one that is not available in India. But today you can actually buy a digital Nike shoe online, which is an NFT and it's a collectible. आज वो बेच रहे हैं उसको शू को, जैसे Nike.com आप जाके खरीदते हो, वैसे ही Swoosh भी एक और वेबसाइट बना दी उन्होंने, आप डिजिटल वहां से खरीद लो. तो क्वेश्चन क्या है कि जो Gen Z Gen Alpha है, इसको दो तरीके से इसको आप टारगेट कर सकते हो. पहला तो तरीका ये होगा डिजिटल कि उसको आप ये बोल सकते हो, देखो यार आओ और गेम खेलो. जैसे अमन ने बहुत बढ़िया बात बोली, वो वाइस न्यूज करके एक चैनल है, आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस चैनल कॉल्ड वाइस न्यूज. अच्छा न्यूज चैनल है, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड चैनल है. उनमें एक राम करके उनके जर्नलिस्ट हैं, बहुत इंडियन है, अमेरिकन इंडियन. उन्होंने ये स्टोरी भी की थी वाइस न्यूज के अंदर में. इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम मनीला, जिधर में ये अर्न टू एक्सेस इन्फिनिटी गेम पीपल ने खेलकर अपने घर बनाए वहां पे लोकल. सो वाइस न्यूज में आप देखोगे तो मिलेगा. अब क्वेश्चन है कि अर्न टू प्ले टू अर्न तो एक बात है. अभी मुझे कल ही किसी ने रीच आउट किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, वो कहते हैं अर्न व्हेन यू लर्न. मतलब जितना आप लर्न करोगे उतना ही ज्यादा आप कमाओगे भी. इट्स ऑल्सो ब्लॉकचेन बेस्ड एंड मेटावर्स बेस्ड गेम. तो जब जो मेटावर्स की जो डेफिनेशन है ना, उसमें थोड़ा सा ट्विक है. वेयर यू हैव अ क्रिएटर्स इकोनॉमी, that means I can go create my experience, monetize the experience, make the money and take all money back home other than the transaction fee equals to metaverse. Everything else is called immersive experience. माने अभी हम यहां बैठे हैं, अगर हम विज्ञान भवन का बना दें एक 360, that's not metaverse, that's immersive experience. But as soon as मैं ये बोलूं कि now this room belongs to me and I will give you this room on a rent if you want to do a convention like this, then I make money, and whenever you give me the money on the system, I only pay the transaction fee 2-3-4% का, whatever the blockchain का percent है उसका इनका, because वो fluctuate होता है depending on when you transact with me. Now the next generation of Gen Z and Gen Alpha which is now in the metaverse, आपको थोड़े से statistics बताता हूँ उसमें क्या हो रहे हैं. Who will ultimately go and build on the metaverse? तो ये क्वेश्चन मैं खुद को पूछते रहता हूं, because even I am not building on the metaverse. So I keep asking me कि अगर मेरे से कोई पूछे आपने बनाया है, आप राहुल जितनी बातें करते हो मेटावर्स की, तो आपने बनाया है? तो मैं खुद को क्वेश्चन करता हूं, तो मेरे पास आंसर है इसका. Whenever you want to create a community is when you will try to design something on the metaverse. I can always go create a virtual store on the metaverse. किसने रोका है? I can always create one metaverse के अंदर में जाके Decentraland में I'll make one Rrahul Sethi store. But who will come? People will come only when you have a community building. So what is happening is, while there is a community building, जैसे आज से 15 साल पहले अपन जब start किए Instagram, Facebook and so many other portals had come, we were trying to create all family friends, we were connecting with them. Then eventually some of our fan clubs got created. And those fan clubs eventually became and started collaborating with us, commenting on what we were doing and all that. Up similarly, what's happening is that this Gen Z and Gen Alpha, the guys which are say over 12 years to anywhere between 18 and 20 or 22 years, what's really happening is they don't want to go into Insta and Facebook anymore. Actually, the ones who have younger siblings should go back and ask them, will you go create an ID on a Discord or will you create an ID on a Facebook Insta? Most likely Discord, you'll get the answer. Now Discord सर्वर्स पे जब ये जनता जा रही है, तो यही रीजन है कि ज़करबर्ग साहब को मालूम पड़ा 4 साल पहले कि ये होने वाला है, इसीलिए उन्होंने कहा इस कंपनी का नाम है मेटा. इशू उनका मेटा का नहीं था, इशू उनका वो वियर एडगर नहीं था. इशू इज पीपल. He understands people are moving from Facebook to Insta to something else. So he says no problem. We will go and create a metaverse. We'll have the community go from there into our metaverse, which of course is not working out. Everybody knows. However, he is not the only one. Metaverses are Decentraland, metaverses are Sandbox, metaverses are so many, Paxworld, Macworld, Roblox, Sandbox, so many of them. So you can choose any one of them you go to. Now, the Gen Z and the Gen Alpha which is going to Discord, that community, of people who is there, somebody has to go track it. So most likely what will happen, this question keeps coming to me. This question actually came from a skill development, NASCOM skill development head. One day morning, she said, I want a bite from you for the NASCOM YouTube
that Meta is firing so many people, so Meta is shutting down secretly. And I kept laughing, smiling, because she was on a call. I said, okay, I'll send you the bite. The question is, we have to go back to understand the fundamentals of the metaverse. One, it's creators economy, number one. It was never immersive experience, it was creators economy. Number two, it's backed by some currency, whether fiat or crypto, depending on दोनों में से आप कोई भी use करते हो. Number three, it is all about creating experiences on the metaverse so that people have an opportunity and they want to come back into the metaverse. And so if the meta goes and fires people, the metaverse will close? No. If other three metaverses also fire people, then also metaverse will close? No. But what is metaverse made for? अब बना कैसे? These brands, which are either startup brands like your brand, D2C brand, you're a D2C brand. You want to attract a consumer. Your consumer is a Gen Z or a Gen Alpha. If it is, you want them to be a part of your community. You want to sell something. You can't go to them and say, okay, now you go buy this. What you will do, you will show them a movie and say, come watch a movie in your store on the metaverse. And when they will come, you will, as a brand, you will start to go and engage with them. Then next time, maybe there is some some artist you can bring who can come and do some, a show or something. So while the brands will continue to go ad and an ad, the question is, in India, how many brands will go? Let's presume India may only 10% brands have the power to go into the metaverse. Success rate of creating a great engagement online on a metaverse is not more than 5%, which means it's 0.05%. If 0.05% brands go in a year, it takes 1 year to go in. On a monthly basis, it is how much? 0.001? Oh, it's less than 0.002. It's so little. Meaning, if there are, question is, where are those brands? How do I find them? Because if a brand goes and creates experience, I won't come to know. Because I'm in the ecosystem, I might come to know, but the general junta will never come to know that some X brand went to some X metaverse and did it. Therefore, the visibility is limited. However, while that visibility is, let's say, now negligible, presume that metaverse is negligible. I will not even first think or even try to convince anyone कि metaverse का negligible impact है on the internet, and वो बोलते हैं सर हमें तो 1 लाख में 5 लोग को मालूम है. मैं बोलूँगा acceptable. I have no control on that number. Why 0.5% brand जाएगा या 5? I have no control. Therefore, I accept. But one thing I promise you, where I can 100% tell you with full conviction, is that right now there are 150 million folks who are going and playing, 450 million gamers that the Federation of Sports has just now confirmed, playing on 2D. 150 are playing on the immersive tech right now, just on 1 or 2, 3 platforms. In totality, अगर 500 million भी आज खेल रहा है ना, promise me, this number will be a billion in the next 3 to 5 years. The question is, where will those brands be who are not going to metaverse today? It's like this. Rrahul wants to go to Instagram and have 15 million followers. But the competitor started 5 years back, they've got 30 million. No. Rrahul takes 3 years now. It will take 3 years. I can't say, oh no, today I want to be, I'm a hero, I want everything in 6 months. No. It doesn't happen anymore. Because now those folks are all connected with her brand. So, therefore, over a period of time, in the next 2 or 3 years, you will find lots and lots of brands coming into the metaverse, creating experience, and a lot of product launches to be happening. Just the last line, before I could kind of conclude, is one more thing that keeps coming back to me, saying, metaverse mein log nahi aate. I think that news you will see. Decentraland में 3,000 लोग आए. Some news guy went there last बाद भी जाके apology कर दिया. But then apology तो nobody read ना. It's like संजय दत्त वाला. संजय दत्त terrorist question mark देखा नहीं किसी ने. तो वो question mark किसी ने देखा नहीं, तो बाद में वो आगे वही question mark तो हटा दिया हमने. बोले नहीं वो देखा ही नहीं. So similarly, a lot of people say to me, oh, people didn't come to metaverse. Well, I'll give you a very small example. I was in Bangalore in the Web3 Summit just about a week or two back, and I was sitting with one of the largest techno parks in Whitefield. He's a friend of mine for a very long time, and the CEO and we were sitting, and we were just generally discussing about the metaverse application in a techno park. So मैंने बोला एक काम करते हैं, एक छोटा सा guess लेते हैं. You've got 40,000 people in the techno park coming every day. They have got 117 buses,
4,000 bike parking stands, and over 9,000 car parking in the techno park. Every day, 40,000 people come in the techno park to work in 24/7. All Capgemini, Hawaii, every company is there. So, okay, I said, well, imagine that 40,000 people, when they have to order food in the afternoon, they will not go to an app, they will not call, they will just click on their computer, go inside into a cafeteria, they will see some good, nice food, visuals in good 3D way, they'll click and buy and go. You got the largest metaverse inference probably in India. 40,000 people come every day, 24/7 in your immersive kind of a thing. I said, now we'll give it a shape of metaverse. There is a store over there. I will give the store to Hyundai and say, you buy this land on a blockchain, and it's a transaction. It's not like Rrahul writes an email to somebody. No. You have to go into a blockchain, go and buy that land parcel, and then they say, okay, Rrahul, I want an agency like an X to go design my store. So they design Hyundai ka store. Next time, if Hyundai is launching a new car, who has the money? The folks working in that company. 40,000 people have the disposable income, na? Or people outside, they don't have disposable income. वो तो पुराने घर वाले हैं. रिपब्लिक ऑफ वाइल्डफील्ड के बाहर तो घर बने हुए हैं. वो तो अंकल है. वो तो रिटायर्ड हो गए. कोई बैंक से रिटायर्ड है, कहीं से. उन्होंने गाड़ी खरीद ली लाइफ में, इतना खरीदना था. अभी बच्चे खरीदने का टाइम. पर बच्चे तो आईटी पार्क में हैं. तो now this time you cannot put Creta car right outside the techno park के गेट के बाहर, but you can also put the Creta car on the metaverse of the techno park, ना? So, which means the opportunity of commerce is so high in the metaverse that brands and this, aggregators will come eventually for a period of time and they'll monetize it. So there is nothing happening with the metaverse. Hype है, बिल्कुल है. I'm a part of that hype. I'm a production of that same hype. और इससे पहले 3-4 साल पहले मुझे कोई बुलाता भी नहीं था कहीं. मेरे को इतने रिस्पेक्ट की आदत ही नहीं थी. मैंने शुरू में बोला. मेरे को एक बार किसी ने भेजा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने, बैंगलोर में. फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा आप आओ, वहाँ इमर्सिव टेक और मेटावर्स की बात कर रहे हैं. तो घर में गाड़ी आई, टिकट भेजा उन्होंने, एक्सेल सीट वाला. और जब मैं उतरा, वो टोपी वाला गाड़ी खड़ा था. तो मैंने वाइफ को फोन किया. मैंने कहा मेरा समय बदल गया. क्योंकि मेरे को किसी ने बुलाया नहीं 4 साल. तो ये हाइप है, लेकिन एट द सेम टाइम हाइप के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ भले ही 1-2% ब्रांड्स के लिए हैं. तो हम वही 1-2 ब्रांड, हम लोग 1-2% ब्रांड हम ढूंढते रहते हैं, वो 1-2% ब्रांड जो है हमें ढूंढते रहते हैं. ऐसे ही हमारा सिस्टम चलता है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. So, Rrahul, I don't take much time. Just a small question. So, do you think that this metaverse is going to be one of the digital marketing areas? Metaverse will never be a digital marketing. Metaverse is a So the same example that you have mentioned, that for Hyundai, if Hyundai has to launch a car, so that's one of the area that they can use to promote those new cars, right? So it's a one way of saying that it's one of the digital marketing area that like we have LinkedIn post and all. बिल्कुल ऐसे ले सकते हो आप. अगर आप ऐसे बात करोगे तो बिल्कुल ले सकते हो. आपने गाड़ी लॉन्च की, अभी हम घर लॉन्च करते हैं 2 करोड़ रुपए का नोएडा में, उसको एक एड में दे देते हैं न्यूज़पेपर में, उस पर 50,000 लाख रुपए खर्चा होता है. नो, मेरा पॉइंट ये है कि वो जो जाता है न्यूज़पेपर, जिन लोगों के पास जाता है, डू दे हैव अ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ 2 करोड़? नंबर 1, दे डोंट. तो वहां पर जेनजी जेनल्फा डिस्पोजेबल, जिसके पास पैसा है और जिसके पास वक्त है. सबसे बड़ी बात देखो, जिसके पास वक्त है उसका पैसा है. मोस्ट लाइकली जेनजी जेनफा वो गिग्स पे काम करते हैं. आजकल तो बच्चे 10-12 साल 13 साल में जो है कुछ ना कुछ पैसा कमाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ कमाने की सोचते हैं. तो आई थिंक वो जो जनता है जो अभी 12-14 साल से लेकर 24 साल तक जो जाकर गेम्स खेल रही है, वो दे आर द वंस हु आर फ्यूचर कस्टमर्स. So definitely metaverse is good for them. Thank you. Thank you.